Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsan, your teacher for CSC 322 Operating Systems Concepts. Dear students, this is the lecture number 32, the last lecture of this particular course, and this lecture, once again, I have not picked up from your textbook. Rather, you can see that at the end of this particular slide, that this particular lecture I have picked up from Cisco Network Academy, IT Essentials, Advanced Operating System, chapter number 12. ये आपकी बुक का चैप्टर 12 नहीं है, बल्कि ये थैंक्स टू सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी और उनका एक कोर्स है जिसका चैप्टर नंबर 12 है, that I have picked up. And why I have picked up this? Because I found it very interesting and useful, and I just wanted to finish my particular course with some tips and some tricks. और if possible, अगर टाइम ने परमिट किया तो मैं आपको कुछ अपनी तरफ से भी कुछ इसमें आपको गाइड करना चाहूँगा इस पर्टिकुलर लेक्चर में. So, हम स्टार्ट करते हैं लास्ट लेक्चर. Synopsis, what I have intended to discuss in this particular lecture, how can you select an appropriate operating system for yourself or for your clients that should meet the requirement of the client, और अगर आपकी अपनी requirement भी है तो how to install, configure and optimize the operating system. बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मैंने कहा ना टिप्स हैं वो आपको मैं बता पाऊंगा. How to upgrade operating system, how to carry out preventive maintenance for operating systems and how to troubleshoot the operating system. तो ये हमारे objectives हैं, 5 objectives हैं जो मैं I'll try my best कि हम आज के इस लेक्चर में इनको कवर करें. First of all, चॉइस क्या है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की? ब्रांड्स एंड वर्जन्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. मार्केट में 3 बिग प्लेयर्स आर ऑलरेडी देयर. कौन कौन से? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत बड़ा शेयर है उनका यूजर्स में के सर्कल में. एप्पल मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूजुअली एप्पल बुक के ऊपर, एप्पल नोटबुक के ऊपर, और एप्पल मैकिंटॉश जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज होता है. देन यू हैव यूनिक्स, और यूनिक्स का ही एक वर्जन है विच इज जो कि GNU है, और विच इज नॉट यूनिक्स, मीन्स कि वो फ्री है फॉर द जनरल पब्लिक और उसका राइट्स भी पब्लिक के पास है. Several versions of the distributions are also possible. अगर आपने डिसाइड कर दिया है कि विंडोज ही प्लेटफॉर्म होना चाहिए तो फिर कौन सा प्लेटफॉर्म, क्या वो सर्वर है या वो क्लाइंट है, और विंडोज 2000 प्रोफेशनल है, विंडोज 2003 है, विंडोज XP होम या विंडोज XP प्रोफेशनल, और विंडोज मीडिया सेंटर एडिशंस. Or you can have a Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business and Premium editions. So these are the choices you can have. और ये similar choices आपके पास Unix के अंदर भी हैं. So you have to compare operating systems or editions to find out the best one for your customer. किसके साथ आपने compare करना है? And operating system is an interface between user and the computer. ये तो एक well known बात है जो मैंने आपको बताई है. तो इसको आपने ज़हन में रखते हुए कि what type of interface has been provided by the operating system, कौन सा interface convenient है, यूजर का प्रोफेशनल लेवल क्या है, उसके हिसाब से यू हैव टू सी. और फिर ये भी आपको डिसाइड करना है कि कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर काम करना है कि ग्राफिकल इंटरफेस में काम करना है. सो व्हाट आर द रिकमेंडेड मिनिमम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट आर द रिकमेंडेड मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ for the installation of the operating system. Means ke what type of hardware abstraction is present in the selected system, ताकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है हार्डवेयर को के साथ इंटरेक्ट करने में, इंस्टॉल करने में. दी फाइल सिस्टम, किस किस्म का फाइल सिस्टम चाहिए, फाइल का साइज कितना ग्रो कर सकता है, अवेलेबल टूल्स फॉर दी मैनेजमेंट इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास क्या क्या अवेलेबल हैं, और वो जो मैंने शुरू में बात की कि GUI जो है या कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो उसमें से क्या चॉइस आपने करना है. फिर एक आपको और चॉइस ये भी देखनी है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम
Network operating system, for example, operating systems required for single मशीन और फॉर द नेटवर्क. अगर तो सिंगल मशीन है तो आपने ऑब्वियसली उस पर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है, बट इफ यू आर इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर वन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, ये किसी ऑफिस के लिए प्रपोज करने जा रहे हैं, कोई नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए प्रपोज करने जा रहे हैं, हैविंग मल्टीपल मशीन्स टुगेदर, और द पर्सन हु वांटेड टू जॉइन सम अदर कम्युनिटी थ्रू इंटरनेट, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है. एक तो होता है ना कि आपकी एक इंडिविजुअल मशीन है और आप उसको इंटरनेट से आप इंफॉर्मेशन डाउनलोड करते हैं, बट यू रिमेन एज एन सिंगल यूजर नोड के तौर पर आप ज्वाइन करते हैं. एक होता है कि आप नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो ये आपको डिसीजन लेना है. और फिर एग्जांपल्स ऑफ द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वंस अगेन यू हैव गॉट विंडोज 2000 सर्वर, 2003 एंड 2004, 2008 जो ये रिसेंटली भी अवेलेबल है, और इसी तरह यूनिक्स के मुख्तलिफ फ्लेवर्स भी अवेलेबल हैं. यूनिक्स का एक फ्लेवर सोलारिस भी है जो कि सन मशीन्स के ऊपर हम नॉर्मली यूज करते हैं. सो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सेवरल प्रोटोकॉल डिजाइन टू परफॉर्म नेटवर्क फंक्शंस. ओके, देन आपको थोड़ा सा डायरेक्टरीज का फाइल सिस्टम का तो आपको नॉलेज है, लेकिन इंस्टॉलेशन टाइम के लिए आपको जो डायरेक्टरीज के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि द विंडोज सेटअप प्रोग्राम्स क्रिएट डायरेक्टरीज दैट हैव अ स्पेसिफिक पर्पस. और कौन सी यूजर फाइल जो है, फॉर एग्जांपल उसके लिए आप C:/डॉक्यूमेंट्स है, और ये जो एंड सेटिंग्स है, सेटिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं यूजर नेम और /my documents. सिस्टम फाइल्स C:/Windows, यहाँ पे आप विंडो का नाम भी आ सकता है, विंडो विस्टा जो भी whatever, और /system32. और टेम्परेरी फाइल्स you can just put it anywhere, or you can have some local settings for the temporary file as well. Program files are, when you install an operating system, all the program files जो हैं they are stored in C:/files. ये जो C: है ये आपकी ड्राइव है, ये आपकी हार्ड डिस्क है, ये आपकी डिवाइस का हार्ड डिस्क डिवाइस की पार्टीशन है, और जो कि एक एक्टिव पार्टीशन. आई विल कम बैक टू दिस इन फ्यू मिनट्स. सो ऑफलाइन फाइल्स एंड फोल्डर्स हेल्प मोबाइल यूजर टू फॉर मोर प्रोडक्टिविटी. ये भी एक फीचर है ऑफलाइन, अगर आपने ये उसको बनाया हुआ है /CSC, ये आपका एक सूट केस है, जब आप उसको कहीं आपने मूव करना होता है तो फिर आप उसको फौरी तौर पर उसकी कॉपी जो है आपको अवेलेबल होती है, और वो जो मोबाइल कस्टमर जो क्लाइंट्स हैं वो नॉर्मली इसको इस फोल्डर के अंदर अपनी मोस्ट रिसेंट फाइल्स को मेंटेन करते हैं. Install, configure and optimize the operating system. In order to install, suppose Windows XP Professional आपने install करना है, तो what you will do, you will insert the installer CD into the CD-ROM. The installation wizard, it will automatically have the auto run चलने के बाद it will ask you a series of questions, or the wizard completes the installation automatically. You just need to ask some basic questions जो कि as a user भी आप उसको बता सकते हैं. लेकिन आपके पास choices क्या क्या हैं? You can have a default installation that requires a minimum user interaction. अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं है आपके पास तो आप you can have a default installation, but after studying the complete operating system course and having a very good understanding and knowledge, then you should try also, एक trial purpose के लिए भी a custom installation. In the custom installation, users are required to customize regional settings and network settings and some settings on the hard disk also. The file system की settings भी आप कर सकते हैं. The technician, means the professional, can automate and customize a Windows XP Pro installation to include which are included in the next slide. Windows XP Pro installation की आपको इस किस्म की एक स्क्रीन नजर आएगी, और यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट करते जाएंगे, और आप चूज करेंगे कि प्रोडक्टिव एप्लीकेशन सच एज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने इंस्टॉल करना है साथ में. दीज आर दी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं एप्लीकेशन. कस्टम एप्लीकेशन स्टैंडर्ड पैकेजेस भी हो सकते हैं कस्टम एप्लीकेशन के अंदर, और कस्टम एप्लीकेशन जो है उसमें आप
स्टैंडर्ड पैकेज के अलावा किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलप किए हुए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं. सपोर्ट फॉर दी मल्टीपल लैंग्वेजेस दैट यू आर बाउंड टू प्रोवाइड टू योर क्लाइंट. फॉर एग्जांपल जब आप सी की प्रोग्रामिंग करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन के सी आप कौन सी यूज कर रहे हैं, टर्बो सी यूज कर रहे हैं, C++ यूज कर रहे हैं या विजुअल सी यूज कर रहे हैं. अगर टर्बो सी यूज कर रहे हैं देन यू हैव टू कॉपी द टर्बो सी और उसकी इंस्टॉलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है. यू आर रिक्वायर्ड टू कॉपी दी फाइल्स इनटू द अप्रोप्रिएट डायरेक्टरीज. फिर आपको उसकी एनवायरनमेंट सेट करनी होती है, डायरेक्टरी सेट करनी होती है, पाथ सेट करना होता है. और इसी तरह का कोई और लैंग्वेज भी जब आप इंस्टॉल करेंगे तो फिर ये सारी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है. बट इफ यू आर इंस्टॉलिंग अ वेरी स्टैंडर्ड लाइक विजुअल सी, so Visual C is a part of the Visual Studio, a very popular product of Microsoft जो MSDN के अंदर आपको प्रोवाइड की जाती है, तमाम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है. और उसका एक comprehensive procedure है which is much more similar to this operating system installation. आप उसको जरूर ट्राई आउट कीजिएगा. मैंने अपने कोर्स के अंदर, लैंग्वेज कोर्स के अंदर पूरी उसकी कंप्लीट डेमोस्ट्रेशन भी दी हुई है. Then the operating system deployment feature pack using Microsoft System Management Server, SMS. That is something very interesting. एक ज़माना था कि आपको जो प्रोफेशनल्स थे those were available और all those professionals were available जो ऑनलाइन आप उनके साथ ईमेल के जरिए अवेलेबल होते हैं. लेकिन अब इतना स्टैंडर्डाइजेशन हो गई है कि अगर आपको इंस्टॉलेशन के लिए सपोर्ट चाहिए माइक्रोसॉफ्ट से तो माइक्रोसॉफ्ट हैज प्रोवाइडेड अ सर्वर और आप उस सर्वर के साथ आप उसको आप कम्युनिकेट करते हैं, लिंक करते हैं अपनी मशीन पे और सरप्राइजिंगली it works and it works very well. So hardware device drivers then you need to install और आपको पता होना चाहिए normally plug and play drivers होते हैं लेकिन there are certain drivers. कोई आपने specialized किस्म की अगर कोई device attach की है तो उसके लिए आपको उसका driver पहले ढूंढना होगा, install करना होगा. उसका भी मैं procedure जो है I will be talking about in the next slide, maybe next to next slide. Then अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन कौन सी है कि फ्रॉम अ नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट यूजिंग एन आंसर फाइल. अगर आप इस किस्म की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो एक आंसर फाइल आपको प्रिपेयर करनी होती है और आप एक नेटवर्क के साथ ज्वाइन करते हैं और वहां से वो ना सिर्फ ये कि डाउनलोड हो रहा होता है बल्कि इंस्टॉल भी कर रहा होता है सिस्टम को. दूसरा है इमेज बेस्ड इंस्टॉलेशन. Image based installation using sysprep and a disk image program. Image based installation की कब जरूरत पेश आती है? Suppose you are working as an administrator at a university level or you are required to prepare a complete lab comprising 40 to 50 computers. और usually when you are setting up a new lab तो एक ही जैसे आपको एक ही ब्रांड के एक ही कैटेगरी के आपके पास सिस्टम्स होते हैं और usually you have a similar hard disk also. और even अगर बहुत ज़्यादा similar ना भी हो hard disk yet you can use the image backup. So what you basically do कि you install as per your requirement, as per your specification, you test that, you do that everything and make sure कि whatever आपने उसमें सेटिंग करनी है एक दफ़ा उसको करवें. अगर कोई एक भी सेटिंग भूल जाएंगे तो बाद में ये इमेज जो है 50 कंप्यूटर्स पे कॉपी होगा तो हर कंप्यूटर पे जाके आपको वो एक्टिविटी रिपीट करनी पड़ेगी. सो मेक श्योर कि वो जो आप जिसका आप इमेज बनाने जा रहे हैं इज द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंटेन्स ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस जो कि आपने उसको सेटअप किया हुआ है. नेक्स्ट है रिमोट इंस्टॉलेशन. जिस तरीके से आपको मैंने शुरू में बताया कि वो आप नेटवर्क से इंस्टॉल कर सकते हैं, एक रिमोट इंस्टॉलेशन भी होती है विच यूज रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विसेज RIS विच कैन बी डाउनलोडिंग द इंस्टॉलेशन अक्रॉस द नेटवर्क. उसके बाद अच्छा पहले में और इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे आपको एक फाइल बनानी होती है आंसर फाइल, जबकि यहाँ पर आप जो है सारा का सारा एज इफ कि आप अपने CD-ROM की बजाय रिमोट से डाउनलोड कर रहे हैं. आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और वो आप साथ साथ इंस्टॉल भी कर सकते हैं. सो ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट फीचर पैक वो जो मैंने SMS का मेथड बताया आपको उसके जरिए भी आपकी इंस्टॉलेशन हो सकती है. देन यू हैव टू डिसाइड द डिस्क स्ट्रक्चर.
So you have to create a view that manage your disk, directories and files. So typically you need to first of all decide the partition. और आपके पास आपको एक primary partition होती है और usually you cannot subdivide to that particular partition. और उस partition के अंदर आपने operating system रखना होता है और जिसमें आप operating system रखते हैं उस partition को आप active कर देते हैं. Then you can have some extended partitions और extended partitions जो है that is one per drive लेकिन उससे that can be subdivided into logical drives. C के बाद आपके D हो गया और D जो है अगर extended है तो आप उसको E और F भी कर सकते हैं और अगर आपकी सारी जो हार्ड डिस्क की डिवाइस पार्टीशंस के बाद जो नेक्स्ट अवेलेबल लेटर होता है वो आपकी CD ड्राइव हो जाती है. और इसी तरह जो आपकी फ्लैश डिस्क है वो उसके बाद आपने देखा कि कभी H आता है कभी वो G के तौर पर आपकी रिमूवेबल फ्लैश डिस्क जो है वो शो हो रही होती है. The disk manager utility is a very powerful feature available in the Microsoft environment. With the help of this disk management, it's a graphical feature. उससे आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क की पार्टीशन का साइज कैसे आप मैनेज कर रहे हैं. So using the disk partition utility, disk management utility, آپ پارٹیشن کا پورا ایکس رے کر سکتے ہیں. بڑے اچھے طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کہاں کہاں پر کون کون سی پارٹیشن بنائی ہے, کون سی ایکسٹینڈڈ ہے, کون سی لاجیکل ڈرائیو اسائنڈ ہے. آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ نام اسائن کر سکتے ہیں اور بہت سارے فیچرز ہیں. جب آپ اس کو کبھی موقع مل جائے تو ٹرائی آؤٹ کیجیے گا. دین فائل سسٹم آن ونڈوز, آپ کے پاس 2 choices ہیں ونڈوز پہ فائل سسٹم کی. میں نے آپ کو شاید جب پڑھایا تھا کورس تو میں نے آپ کو 3 بتائی تھیں, FAT16 بھی, FAT32 بھی اور اینٹی فائل سسٹم جس کو NTFS بھی کہتے ہیں. لیکن ناؤ ڈیز اٹ از جسٹ FAT16 has almost obsoleted, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کوئی ایون FAT32 جو ہے FAT32 کی بھی خاصی لمیٹیشن نظر آئے گی ان ٹرمز آف سیکورٹی. اٹس a low security, whereas anti-file system, NTFS, is a 5 and folder level permissions are encrypted. Okay, compatibility کے point of view سے it is compatible with the previous one, جس کی وجہ سے اس کو اتنا پاؤں میں اس کے بیڑیے ہیں, جس کی وجہ سے کیونکہ اس نے بیکورڈ کمپیٹیبلٹی دینی ہے اور it can be read write to by Linux and Mac OS users as well. Similarly, read only for the Linux and Unix ہے اگر تو ہم اس کی NTFS کی بات کریں گے اور اس کی compatibility جو ہے وہ صرف NT2000, اس سے بیکورڈ کمپیٹیبلٹی obviously اس سسٹم کے ساتھ اس کی نہیں ہے. فائل سائز جو پارٹیشن کا جو سائز ہے اٹس لمٹ اپ ٹو 4 GB فائلز, دیٹ از 32 GB گیگا بائٹ والیومز ہے, جبکہ یہاں پر اٹ از 16 ٹیرا بائٹس, ہیوج سائز. اوکے, اینڈ 256 ٹیرا بائٹ والیومز ہیں اس کے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد فائلز پر والیوم جو ہے 4 ملین ورسز 4 بلین, بہت بڑا فرق ہے, 1000 ٹائمز زیادہ ہیں. اور فائل سائز, لارج کلسٹر اور ویسٹ آف سم سائز. لارج کلسٹر ہم کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو پیجز میں بھی بتایا تھا کہ اگر آپ سائز بڑا کریں گے نا تو پھر آپ کے پاس انٹریز کم ہو جائیں گی, انٹریز کم ہو جائیں گی تو آپ کا جو پیج ٹیبل کا سائز ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا. تو وہی بات ہے کہ اس کے کلسٹر کا سائز بڑا اس لیے کیا گیا کہ پیچھے اوور ہیڈ جو ہے ان کا سائز کم ہو. دوسری سائڈ پہ کیا ہے کہ اسمالر کلسٹر obviously اس کے ریورس ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کے پاس اسپیس کی لمیٹیشن کوئی نہیں ہے. ریلائبلٹی ڈز ناٹ ٹریک چینجز, جبکہ یہاں پر آپ جنرلنگ یاد ہے اسٹوڈنٹس آپ کو, میں نے آپ کو فائل سسٹم کے اندر ایک کانسیپٹ پڑھایا تھا. فائل سسٹم میں یہ آپ کو آئی او ڈیوائسز کے ساتھ میں نے ایک آپ کو کانسیپٹ پڑھایا تھا, لاگنگ بھی اور جنرلنگ بھی اور بیک اپ بھی. تو یہاں پر فائل NTFS جو ہے وہ ایک جنرلنگ فیچر دیتا ہے which helps to rebuild the file system after a crash or after the power failure. اگر آپ ڈیٹا ایکسس کرتے ہوئے آپ کی پاور فیلئر ہو جائے تو آپ کی ہارڈ ڈسک بھی کریش کر جاتی ہے. جب سسٹم کے ساتھ ہارڈ ڈسک کریش کرتی ہے تو آپ کا فائل سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے. لیکن یوزنگ دا جنرلنگ میکینزم آپ اپنے فائل سسٹم کو ریکور کر سکتے ہیں, اور اگر آپ اپنے فائل سسٹم کو ریکور کریں گے تو آبویسلی آپ جو ہے اپنے فائلز کو بھی ریکور کر پائیں گے. سو آگے چلتے ہیں.
There is a very useful tool which is called a check disk, CHKDSK. ये आप कमांड लाइन के अंदर भी यूज कर सकते हैं और GUI के अंदर भी यूज कर सकते हैं चेक डिस्क. सो बेसिकली अगर आपको हार्ड डिस्क को रिपेयर करना है तो हार्ड डिस्क की जो डे टू डे रिपेयर है, जो भी आपने करनी है, इनके बैड ट्रैक्स अगर आ जाते हैं या इस किस्म की कोई आपने चीज चेक करनी है तो आप चेक डिस्क करें, लेकिन इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग. ये सारे काम जो है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन हो गया और ये सारे टूल्स टाइम कंज्यूमिंग है. तो नॉर्मली आप इसको फ्री टाइम में या लेट नाइट में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और सिस्टम को ऑन रहने दीजिए ताकि इट कंप्लीट्स द जॉब और फिनिश द जॉब. डिस्क डीफ्रेगमेंटर क्या करता है कि ऑब्वियसली जैसे कि नाम से जाहिर है, हमने मेमोरी मैनेजमेंट में और डिवाइस मैनेजमेंट में पढ़ा है फ्रेगमेंटेशन. डिस्क की फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है? यू क्रिएट द फाइल, फिर यू डिलीट द फाइल और फिर वक्त के साथ साथ फाइल क्रिएशन, फाइल डिवीजन, तो बहुत सारे होल्स बन जाते हैं हार्ड डिस्क के अंदर. ये होल्स क्या है? सेगमेंट्स हैं जो कहीं यूज्ड है और कहीं अनयूज्ड है. जो अनयूज्ड एरिया उसको हम होल कह रहे हैं. तो जब ये सारे के सारे इस किस्म की सिचुएशन हो जाती है हार्ड डिस्क के ऊपर, तो फिर उसको किसी फारिग टाइम पे, किसी स्पेयर दिन में, लेट नाइट में, इवनिंग में या आप डिस्क फ्रेगमेंटर चला दें. व्हाट इट विल डू कि ये रीएलोकेशन करेगा, सारे ब्लॉक्स को कंबाइन करके कंटिगुअस स्पेस के अंदर फाइल्स को ले आएगा और एक बड़ा चंक जो है हार्ड डिस्क का जो है आपका फ्री हो, उसको उन सारों को सेपरेट करके एक जगह पर उसको फ्री कर देगा. इससे एक तो डिस्क की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाएगी और आपका जो फाइल का जो मैकेनिज्म है वो भी ज्यादा इंप्रूव कर जाएगा. देन सिस्टम इंफॉर्मेशन टूल्स अवेलेबल हैं और इसमें नेट डायग्नोस्टिक्स टूल है जिसको आप नेट के डायग्नोस्टिक्स के भी यूज कर सकते हैं. सिस्टम रीस्टोर है, इसके लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज बेहतर चाहिए, टाइम चाहिए और एक एक्सपीरियंस चाहिए ताकि आप बेसिक चीजों को पहले समझ में, ताकि जरूरत पड़े तो फिर आप उसको उससे रिकवर कर सकें. फिर फाइल सिग्नेचर वेरिफिकेशन यूटिलिटी है. डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक्स टूल है. डायरेक्ट एक्स जो है आपके बहुत सारे ग्राफिक्स कार्ड्स जो हैं वो डायरेक्ट एक्स की सर्विस यूज करते हैं. तो कभी आपको इत्तेफाक हो, कोई आप अगर VGA या XGA या कोई एक नया कार्ड जो है 3D कार्ड लेकर आते हैं, अपनी मशीन में लगाते हैं, तो वो आपसे कहता है कि डायरेक्ट एक्स का ड्राइवर नहीं है, तो आपको उसके साथ कंपैटिबल डायरेक्ट एक्स का ड्राइवर चाहिए होता है. तो डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक्स टूल की मदद से आप देख सकते हैं कि आपका ड्राइवर कौन सा है, उसकी सेटिंग क्या है, कितनी मेमोरी उसके साथ अटैच्ड है और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं. जिस तरह एक डिस्क डॉक्टर होता है, इस तरह का ये डॉक्टर वाटसन है, एक टूल है जो कि आपको आपके सिस्टम को रिपेयर करने में आपको फैसिलिटेट करता है. ये सारी चीजें स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन तो कर रहा हूं, बट आई एक्सपेक्ट कि जब आपको फ्री टाइम मिलेगा आफ्टर योर सेमेस्टर ब्रेक या विद इन योर सेमेस्टर ब्रेक आफ्टर दिस सेमेस्टर, आप ये सारी चीजें जो है ना सुकून से ट्राई आउट कीजिए अपने सिस्टम पे और मेक श्योर कि सारा काम करने से पहले अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स जो हैं, अपना इंपॉर्टेंट डेटा जो है उसका बैकअप बना लें. क्योंकि जब आप ये नया मैकेनिज्म लर्न करेंगे, सारे प्रोसेस से गुजरेंगे, तो देयर इज ए चांस कि हो सकता है कि कोई आपका फाइल या डिस्क जो है वो करप्ट हो जाए. वर्चुअल मेमोरी. अब वर्चुअल मेमोरी जो है, यू नो दैट के वी यूज बेसिकली द हार्ड डिस्क एंड दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज द स्वैप फाइल टू मिमिक रैम. मिमिक क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था, नकल करने को. तो आपकी रैम के साइज को बढ़ाने का वो वर्चुअली प्रिटेंड करता है कि आपकी रैम का साइज बहुत बड़ा है, वो यूज करता है हार्ड डिस्क को. तो पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क इज यूज्ड एज ए रैम. तो वो जो हार्ड डिस्क का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं स्वैप एरिया. वो स्वैप एरिया जो है आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर क्रिएट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और वो रैम की चीजें जो हैं वो उसके ऊपर कॉपी करता है और टेक इट बैक टू द रैम आल्सो. सो स्वैप फाइल यूजेस फ्री स्पेस ऑन द हार्ड ड्राइव टू टेम्परेरी स्टोर द सेगमेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन एंड द डेटा. यू कैन एडजस्ट द स्वैप फाइल. शुरू में था, स्टार्ट में आप स्वैप फाइल का साइज बढ़ाते थे तो आप समझते थे सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर जाएगी, बट इट रिलेट्स विद मैनी थिंग्स. तो जब आप ऐसा नहीं है, बाज़ औक़ात स्वैप फाइल का साइज बहुत बड़ा करने से क्या होता है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की बजाय डिप्रूव हो जाती है. सो इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द स्वैप स्पेस इज नॉट ऑलवेज हेल्पफुल in increasing the performance of the system.
یہ ایڈمنسٹریٹو ٹولز ہیں اور آئی ایکسپیکٹ کہ یہ ایڈمنسٹریٹو ٹولز جو ہیں آپ ٹرائی آؤٹ کریں گے. اور ان ٹولز میں ہے آپ کا ایونٹ ویور ہے, ویری امپورٹنٹ ٹول, جو کہ ہسٹری کو لاگ کرتا ہے اور ہسٹری مینٹین کرتا ہے, سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے, سسٹم کی لاگ مینٹین ہوتی ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سسٹم کریش ہونے کا ریزن کیا تھا یا کون کون سے یوزرز جو ہیں وہ کیا ایکٹیویٹی کرتے ہیں, اور اس کو آپ بہت ڈیٹیل ویو کر لیتے ہیں. دیر آر کوائٹ اے فیو ٹولز آلسو دیٹ آر اویلیبل, جو کہ اس وقت کرنٹ ورکنگ انوائرمنٹ میں جو آپ کے یوزر اپنے ڈیسک ٹاپ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان کے ڈیسک ٹاپ کو کاپی کر کے سائملٹینیسلی دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کون سا یوزر اس وقت کیا ایکٹیویٹی کر رہا ہے. لیکن یہ نارملی یہ ایسا کرنا جو ہے امورل ہے, کیونکہ آپ کو کسی کی پرائیویسی کے اندر انٹر نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ نے کسی کلپریٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, کسی ہیکر کو, کسی ایسے آدمی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جو پرابلم کریٹ کر رہا ہے, تو ایسی صورت میں آپ خاموشی سے اس قسم کے ٹولز کا استعمال جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. Then there is a computer management that provide access to the administrative areas such as system tools, جو کہ ڈسک کو آپ نے اسائن کرنا ہے, آپ نے مختلف اسٹوڈنٹس کو فرض کیا سروس آپ نے پرووائڈ کرنی ہے, ڈفرینٹ اپلیکیشنز جو ہیں ان کو سروس آپ نے پرووائڈ کرنی ہے, تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. دین دیر از اے سروسز آلسو, یہ میں آپ کو دکھاؤں گا, میرا خیال ابھی تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے اینڈ پہ, تو میں یہ چیزیں بھی آپ کو دکھاؤں گا لائیو کہ یہ کون سے کیا مراد ہے. مینیجز آل آف دا سروسز آن لوکل اور ریموٹ کمپیوٹرز. دین دی پرفارمنس مانیٹر دیٹ ڈسپلیز اے لاگ ریئل ٹائم انفارمیشن اباؤٹ دی پروسیسر, ڈسک, میموری اینڈ نیٹ ورک یوزیج. یہ آپ دکھا سکتے ہیں. میں بھی آئی ول ٹرائی, لیٹ می فنش فرسٹ, دین آئی ول شو یو دیز تھنگز آلسو. Then operating system performance optimization. The device manager allows you to view all the settings for the devices in computer such as IRQ, IO addresses and DMA settings. Once you are quite experienced ایڈمنسٹریٹر, جب آپ یہ ساری چیزیں رن کرویں گے تب اس کو چھیڑیے گا. اور اس کا بیسٹ طریقہ کیا ہے ایکسپیرینس گین کرنے کا؟ گو اینڈ ریڈ اٹ آؤٹ, اسپینڈ سم ٹائم, اسپینڈ لاٹ آف ٹائم ود دی ڈیفالٹ سسٹم settings, because all the default system settings have been carried out, have been done by very professional, experienced people, and these are the good practices that are resulted into these default values. تو ان سے اسٹڈی کرنے سے نہ صرف یہ کہ آپ کو پتا چلے گا ڈیفالٹ ویلیوز کیا ہے, بلکہ یہ بھی پتا چلے گا کہ ڈیفالٹ ویلیوز کیوں ہیں اور what are the choices you have to adjust and troubleshoot your system. لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے ڈیفالٹ ویلیوز کا پتا ہونا ضروری ہے. The task manager allow you to view information about the applications that are currently running. اور میں نے آپ سے پرومس کیا ہے کہ اینڈ آف دس لیکچر میں آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں دکھاؤں گا کہ یہ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں. The system monitor is a part of the performance, controls and display all the real time information. یہ بھی ہم دیکھیں گے ابھی تھوڑی دیر میں. ویب براؤزر از موسٹ پرابیبلی جو ٹپیکلی سب سے زیادہ یوزڈ اپلیکیشن ہے, کیونکہ آپ براؤزر یوز کرتے ہیں ٹو براؤز انٹرنیٹ. چھوٹے چھوٹے کڈس جو کمپیوٹر یوز کرنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے وہ انٹرنیٹ پہ جانا چاہتے ہیں, انٹرنیٹ کو براؤز کرنا چاہتے ہیں. دین دا نیکسٹ جو سیریس فیلوز ہیں دے یوز دا ای میل, اور اس کے لیے آپ کو ای میل سرور جو ہے اس کو آپ نے سیٹ اپ کر کے دینا ہوتا ہے. تو آپ کے پاس چوائسیز کیا ہیں براؤزر کے لیے؟ فار ایگزامپل یو کین یوز انٹرنیٹ ایکسپلورر, اور اس کی آپ کو جنرل سیٹنگز میں فار ایگزامپل واٹ از دا ڈیفالٹ پیج یو وانٹ, آپ کوئی اسپیشل براؤزر کے ساتھ اپلیکیشن کو اٹیچ کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ گوگل کا سرچ انجن جو ہے وہ آپ کے پیج پر آئے, یا آپ چاہتے ہیں کہ ڈیفالٹ پیج جب بھی آپ انٹرنیٹ ایکسپلورر کو کھولیں تو آپ کے ای میل کا لاگ ان پیج جو ہے یا آپ کا وہ جو سرور جو ہے ای میل کا اس کو وہ جا کر ایڈریس کرے اور ڈائریکٹ آپ کو لاگ ان سروس پرووائڈ کرے. تو آپ کے پاس چوائس ہے, وٹ ایور کنفیگریشن یو کین ڈو دیٹ. اٹس ناٹ ایزی, یو کین ایزیلی ڈو اٹ ایٹ دا ٹائم of the fine tuning of the configuration of your system. Then view or delete the information shared by the browser. Okay, so you can, وہی میں نے آپ کو بتایا کہ you can maintain the history or temporary file, cookies, passwords or web information. Configuring an email client software.
تو اس میں آپ نے جو چیزیں کنفیگر کر کے دینی ہے کلائنٹ کو، یہ اپنی وے کرنی ہے کہ ڈسپلے نیم کیا آنا چاہیے، ای میل ایڈریس جو ہے ڈیفالٹ ای میل ایڈریس جو ہے وہ کیا ہے، دین ٹائپ آف ان کمنگ میل سرور کون سا ہے، ٹائپ آف آؤٹ گوئنگ میل سرور کون سا ہے، اس کے بعد آپ نے پروٹوکال کون سا یوز کرنا ہے، POP3 یوز کرنا ہے، آئی میپ کرنا ہے، SMTP کرنا ہے، یہ ڈفرینٹ چوائسیز ہیں جو میں بھی تھوڑی دیر میں آپ کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں نیکسٹ سلائیڈز میں. اور اس کے بعد آپ نے یوزر نیم اور اکاؤنٹ پاسورڈ جو ہے اس کی پروویژن دینی ہے اپنے یوزرز کو. جو پروٹوکالز ہیں POP اسٹینڈس فار پوسٹ آفس پروٹوکال ورژن 3، POP3 کہلاتا ہے، اور we use it to download email from a server to manipulate and store on your local computer. آپ کو پتا ہے نا آپ کا ایک میل سرور ہوتا ہے جو آپ کی تمام ای میل ریسیو کرتا ہے، ڈائریکٹ آپ کا کمپیوٹر ریسیو نہیں کرتا، آپ کا میل سرور ریسیو کرتا ہے. جب آپ لاگ ان کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں میل کے اوپر تو آپ میل سرور میں لاگ ان کرتے ہیں. تو یہ جو POP3 ہے یہ آپ کو ایک فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ سرور سے آپ لوکل مشین پہ ڈاؤن لوڈ کرویں ڈیٹا کو، بعد میں اگر آپ سرور سے ڈسکنیکٹ بھی ہو جائیں تو لوکل آپ اس ساری میل کو دیکھ سکیں، مینٹین کر سکیں، لوکل مشین پہ کام کر سکیں. اس کے اپوزٹ اف یو جسٹ وانٹیڈ کہ آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی بجائے آپ کو صرف ایکسس ملے اور میل سرور پہ رہتے ہوئے آپ نے ڈیٹا کو مینیپولیٹ کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ یو وانٹ ٹو یوز آئی میپ، جس کو کہتے ہیں انٹرنیٹ میسج ایکسس پروٹوکال، دیٹ ایکسس ای میل آن اے سرور ٹو مینیپولیٹ اینڈ اسٹور دی سرور. To manipulate and store on the server your email data. So user can also decide to download. یہ نہیں ہے کہ آپ اگر آپ آئی میپ یوز کر رہے ہیں تو ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے، ڈاؤن لوڈ میں آپ کو فیسیلٹی پھر بھی مل جاتی ہے، آئی میپ یوز کرتے ہوئے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ از اسپیشل میل ٹرانسفر پروٹوکال. اگر تو آپ نے TCP/IP پروٹوکال یوز کیا ہے، یہ میں جو ٹرمینالوجیز یوز کر رہا ہوں آئی ایکسپیکٹ کہ جب آپ نیٹ ورکنگ کا کورس پڑھیں گے جو بیسک کورس ہے آپ کے کمپیوٹر سائنس میں، تو وہاں پہ آپ نے یہ سارے پروٹوکالز اور یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں. میں صرف آپریٹنگ سسٹم کے ریفرنس سے اسپیشلی یہاں پر کہ کنفیگر کرنے کے ریفرنس سے ہم اس چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. سو اگر آپ سمپل ٹیکسٹ میسج جو ہے وہ آپ نے بھیجنا ہے تو اس کے لیے تو آپ SMTP یوز کریں گے، لیکن یوزلی آپ خالی ٹیکسٹ میسج نہیں بھیجتے بلکہ آپ جو ہے نا اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں ڈاکومنٹس، ایپلیکیشن، ورڈ پروسیسر کے ڈاکومنٹس، پکچرز، ویڈیوز، آڈیوز. اگر یہ سارا کچھ آپ نے اٹیچمنٹ کے ساتھ بھیجنا ہے تو پھر آپ مائم یوز کریں، جس کو کہتے ہیں ملٹی پرپز انٹرنیٹ میل ایکسٹینشنز مائم، اور نارملی SMTP کے ساتھ ملا کر اس کو یوز کیا جاتا ہے. اوکے، اس کو آپ کو اکارڈنگلی کنفیگر کرنا ہے. سو یو ہیو ٹو سیٹ ڈسپلے پراپرٹیز. یہ بھی میں شاید اینڈ پہ لیکچر کو ختم کرنے دیں تو میں تھوڑا سا ڈسپلے پراپرٹیز بھی بتاؤں گا کہ آپ کی جو اسکرین کی ریزولوشن ہے ڈپینڈنگ اپون کہ جو آپ کا ڈسپلے کارڈ لگا ہوا ہے، گرافک کارڈ جو آپ نے اپنے کمپیوٹر میں لگایا ہوا ہے، اس کی کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ کتنی ریزولوشن، جتنی زیادہ پکسلز آپ کی اسکرین کے اوپر ہوں گی اتنی زیادہ آپ کی پکچر جو ہے وہ شارپ اور زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ کنوے کرے گی اور زیادہ آپ کو مطلب ڈیٹیل ڈیفینیشن پرووائڈ کرے گی. اور جب پکسلز کم کریں گے، پکسل کا سائز بڑا ہو جائے گا تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ ویسے ویسے آپ کو سیکریفائز کرنا ہوگا. ریفریش ریٹ جو ہے کتنے ٹائم کے اوپر آپ کی ونڈو کو ریفریش کرنا ہے، یہ میگا ہرٹز کے اندر ہوتا ہے. اور نارملی ہمارے ہاں جو آپ کے ریفریش ونڈوز ہوتی ہے یہ آپ کے جو ہمارا سائیکل چل رہا ہوتا ہے 50 ہرٹز کا، لیکن جتنے بھی IT کے اکوپمنٹ ہیں وہ 60 اور 70 ہرٹز کے اوپر ریفریش ریٹ کے اوپر سیٹ کرتے ہیں. تو ہم ریکمینڈ کروں گا میں آپ کو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اٹس آئیڈیل کہ اگر آپ اس کو 60 کے اراؤنڈ رکھیں. ڈسپلے کلرز آپ ریئل، اب تو آج کے دور میں اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ کہ آپ ریئل پکچرز اور کلرز جو ہیں اس میں کام کریں. ہاں ایک زمانہ تھا کہ آپ 16 کلرز، 32 بٹ کلرز اور 16.7 ملین کلرز جو ہے اس کے اندر ہم کام کیا کرتے تھے، لیکن اب تو آپ بالکل ریئل کلرز میں کام کرنا چاہیں گے. ویڈیو ڈرائیور کو اگر آپ نے فرض کیا، دس از جسٹ این ایگزامپل کہ اگر اف یو وانٹ ٹو اپ گریڈ یور ویڈیو ڈرائیور وٹ یو آر سپوز ٹو ڈو. سو بیسیکلی یو
use Windows default video driver that should be able to serve you, but अगर वो सर्व नहीं करता तो फिर आपको क्या करना है, आपको अपग्रेड करना है वीडियो ड्राइवर, और उसके लिए यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि आपकी जो चिप है लगी हुई आपके मदरबोर्ड पे ग्राफिक चिप कौन सी है, और अगर वो मदरबोर्ड पे नहीं है तो पीसीआई के ऊपर आप कौन सा कार्ड यूज कर रहे हैं, उस कार्ड का लेटेस्ट रिलीज ड्राइवर उस मैन्युफैक्चरर की तरफ से कौन सा अवेलेबल है उसको आप डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद आप करंट ड्राइवर को आपको रिमूव करना होगा, फिर एंटीवायरस को डिसेबल करना होगा। एक टर्म होती है टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट, TSR। TSR जो है एक इस किस्म का आपकी रूटीन एग्जीक्यूटेबल होता है जो कि टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट मींस कि वो टर्मिनेट तो हुआ होता है, लेकिन स्टे रेजिडेंट मींस ऑलवेज रिमेन इन दी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, सो डैट कि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पेश आती है। जैसे कि डिस्प्ले ड्राइवर के अंदर आपके डिस्प्ले ड्राइवर को हर वक्त कम्युनिकेट करना होता है, तो इट इज ऑलवेज TSR। इसी तरह आपका जो एंटीवायरस है वो भी उसने भी हर वक्त अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, वो भी एक TSR होता है, टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट, बड़ा विजिलेंट होता है। तो जब आपका एंटीवायरस ऑलरेडी इन्वोक्ड है तो बहुत सारी डिवाइसेस पे को ड्राइवर्स को इंस्टॉल नहीं करने देगा आपके सिस्टम के अंदर, और वो उसको ब्लॉक कर देगा। तो आपको टेम्परेरी डाउनलोड करते हुए ना कीजिएगा डिसेबल, पहले डाउनलोड करवें, चेक करवें। जब आप एक दफ़ा इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं फिर थोड़ी देर के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि इंटरनेट से बेशक डिस्कनेक्ट करवें अपने आप को, और वहां पर फिर आप एंटीवायरस को, क्योंकि आपका जो 99% वायरसेस हैं वो इंटरनेट से आती हैं, फिर आप क्या करें कि अपने एंटीवायरस को डिसेबल कर दें फॉर द टाइम बीइंग, ड्राइवर को इंस्टॉल करें, और ड्राइवर को इंस्टॉल करने के बाद दोबारा एंटीवायरस को एनेबल करें और सिस्टम को रीबूट करवें। Dual boot क्या है? You can make your system to have the capability of having the two operating systems simultaneously present. आपकी अपनी चॉइस पे है, आप विंडोज और यूनिक्स को या यूनिक्स को साइड बाय साइड दोनों को एक वक्त में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसी सूरत में कि बूट टाइम के ऊपर सिस्टम आपसे पूछता है कि आपने किस एनवायरनमेंट में बूट करना है। सो ड्यूरिंग द डुअल बूट, boot.inf5 indicate that more than one operating system is present, so you are prompted to choose the operating system that you want to load for that particular session जब आप सिस्टम को रीबूट कर रहे हैं। ओके, सो इसको आप कैसे कर सकते हैं? टू क्रिएट अ डुअल बूट सिस्टम इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, there is more than one hard drives or hard drive with more than one partition। पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास हार्ड ड्राइव सेपरेट हो तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास हार्ड ड्राइव सेपरेट है तो फिर आप जिस पे आपने प्राइमरी रखना है उसको आप मास्टर बनाते हैं और दूसरी हार्ड ड्राइव को स्लेव बनाते हैं। लेकिन अगर आपके पास अगर दो से ज्यादा है तो दो स्लेव भी हो सकती हैं, एक मास्टर भी हो सकता है, और दो से ज्यादा भी स्लेव हो सकते हैं, यस। और पार्टीशन अगर एक ही हार्ड डिस्क पे आपने पार्टीशन की हुई है तो येट यू कैन पुट वन ऑपरेटिंग सिस्टम इन वन पार्टीशन एंड अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम टू एन अनदर पार्टीशन। So you can install the oldest OS on the primary partition, oldest means the first one, on the primary partition or the hard drive and marked with an active partition. Install the second operating system on the second partition or the hard drive. The boot files are automatically installed in the एक्टिव पार्टीशन। आप एक वक्त में एक को भी एक्टिव कर सकते हैं पार्टीशन को, और उस पार्टीशन को खत्म करके दूसरी पार्टीशन को भी एक्टिव कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपकी एक्टिव पार्टीशन होती है वो आपका डिफॉल्ट बूट होगा जहां से कि सिस्टम बूट करेगा। प्रॉम्प्ट फिर भी करेगा सिस्टम, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा टाइम देता है। अगर आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते तो जो आपने एक्टिव पार्टीशन जिस ऑपरेटिंग सिस्टम की हुई है वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट लॉग इन बूट हो जाता है। Message config, these are the command that you can use on command line interface. You can start the system configuration utility, then you can use with the help of computer boots, but will not load the operating system correctly. पास वक्त ऐसा होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने की कोशिश करता है और वो लोड नहीं हो पाता। ऐसी सूरत में आपका सिस्टम लोड होने के बाद ग्राफिकल एनवायरनमेंट में जाने की बजाय कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आ रहा होता है, और आपको उस कमांड प्रॉम्प्ट पे रहते हुए सेफ मोड के अंदर आ जाता है या कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाता है। तो ऐसी सूरत में यू आर रिक्वायर्ड टू स्टे इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, और वहां पर आपको प्रॉम्प्ट के ऊपर अपने सिस्टम को रिकवर करना होता है। तो एक यूटिलिटी है MS config
مائکروسافٹ کنفگ کی ایک یوٹیلیٹی ہے جس کو آپ یوز کرتے ہوئے سسٹم کو ریپیئر کر سکتے ہیں. یو کین آلسو یوز SFC سسٹم فائل چیکر اور اسکین ناؤ فیسیلٹی. اسکین ناؤ یوزلی ایک گرافیکل فیسیلٹی ہے جبکہ SFC جو ہے آپ کو دونوں فارم میں اویلیبل ہے. تو وٹ یو کین ڈو, یو کین چیک آل دی پروٹیکٹڈ سسٹم فائلز اینڈ اسپیشلی ایگزی فائل اور kernel 386.exe. if it is corrupted, so you can just replace or alter the corrupted files with the known good files. Okay, next is upgrading the operating system. The steps that you should know how to upgrade the operating system. Dear students, mind it, it's upgrade, not update. Update جو ہے وہ میں ابھی بعد میں explain کروں گا. Upgrade جو ہے, you have to upgrade the operating system periodically to remain compatible with the latest hardware and software because support for the older operating system is eventually withdrawn. ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے آج سے 5 سال پہلے ایک operating system انسٹال کیا تھا آپ کہتے ہیں it's working fine, I would like to stick with that particular operating system. وقت کے ساتھ ساتھ نئے updates بھی آتے رہتے ہیں, then there comes a time then you are required to upgrade the system with the latest release کیونکہ جو upgraded versions ہوتے ہیں اس کی support جو ہے always present. So a Windows XP upgrade can be performed from a CD or over a network. یہ وہ نہیں ہے جو کہ آٹومیٹک ہوتا ہے, اس کی upgrade کی CDs آتی ہیں یا آپ اس کو نیٹورک کے ذریعے کر سکتے ہیں. So ensure that the new operating system is compatible with the computer جو آپ upgrade کرنے جا رہے ہیں. Then what are the requirements, اور اس کے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں Microsoft Upgrade Advisor. یہ کیا ہے, یہ آپ کے ایک فیسیلٹی ہے, یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ اٹس اے فیسیلٹی ٹو اسکین دی سسٹم فار انکمپیٹیبلٹی ایشوز بفور اپ گریڈنگ. تو اس کو آپ رن کرویں. یو کین اپ گریڈ ایڈوائزر از فری اینڈ ڈاؤن لوڈیبل فرام دا مائکروسافٹ ونڈوز ویب سائٹ. اپ گریڈ کرنے سے پہلے مائکروسافٹ اپ گریڈ ایڈوائزر ڈاؤن لوڈ کریں, وہ آپ کے کمپیوٹر پہ رن ہوگا اور رن ہونے کے بعد وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے سسٹم پہ if there is any compatibility issue or not, and if there is no compatibility issue or if the hardware is what it should be, تو پھر ایسی صورت میں آپ اس کو اپ گریڈ کی طرف جائیں. And important point, before upgrading your system you need to take the backup of the data prior to the beginning of the upgrade. Schedule automatic task and updates. اب میں updates کی بات کر رہا ہوں. Basically there are updates which are released very frequently from the operating system provider جیسے کہ Microsoft ہے, Unix ہے, Linux ہے. تو ایسی صورت میں آپ کے پاس جو updates آتے ہیں اس کو آپ کو schedule کرنا ہے, plan کرنا ہے. Similarly there are some other tasks that you need to plan. For example disk cleanup ہے اور بیک اپ ہے, ڈسک ڈی فریگمنٹر ہے, اسٹارٹنگ ادر اپلیکیشنس ہیں. سو یو جسٹ ڈیسائیڈ کہ آپ نے یہ جو کام جو ہے اس کو اسکیجول کرویں. یوزلی دا پیپل ڈو اٹ ان دا مڈ نائٹ. فار دوز who work on their computer in the midnight and do not use the computer in the morning, so they do it in the morning. So basically primarily you have to decide کہ کس ٹائم پر آپ کا کمپیوٹر جو ہے unattended ہوتا ہے. آپ ان ٹاسک کو schedule کر کے لگا دیں اور یہ آٹومیٹیکلی یہ ٹاسک جو ہے وہ پرفارم ہو جائے گا. اور اگر کوئی آپ نے ایک اسپیشل پروسیجر رن کرنا ہے جس کو کہ آپ نے کہنا ہے کہ it should run on every Sunday یا it should run at 5 o'clock, تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک فیسیلٹی ہے, ایک کمانڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈ کمانڈ. جس ایڈ کمانڈ کے ساتھ آپ ایک اسکرپٹ دیتے ہیں ایڈ کے ساتھ, اور پھر اس اسکرپٹ کے ساتھ آپ کو ٹائم دینا ہوتا ہے, تو اس ٹائم کے اوپر وہ آپ کا اسکرپٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے. Okay, to use the add command you must be logged in as a member of the administrator. یا تو administrator ہو یا آپ نے as a administrator log in کیا ہو. Next is automatically update Windows XP. اب یہ updates کی بات ہے. So you are setting to choose from regarding the Windows XP updates. So you can have these updates available and you just need to specify date and time کہ last time آپ نے update کب کیا تھا. وہ system جو ہے نا ریکارڈ رکھتا ہے اور اس سے onward updates جو ہیں وہ automatically download ہوتے ہیں. اور لیکن جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ download updates for me, but let me
choose when to install them. सिस्टम जो है आप इसके अंदर ये चॉइस रख सकते हैं, या आप कह सकते हैं नोटिफाई मी अबाउट, डोंट ऑटोमेटिकली डाउनलोड और इंस्टॉल देम, ये दूसरी चॉइस है. तीसरी चॉइस क्या है, टर्न ऑफ द ऑटोमेटिक अपडेट्स. जब आप खुद चाहेंगे तब आप अपने सिस्टम को अपडेट्स करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात डिस्टर्बिंग भी होता है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रिपेयरिंग, फॉर एग्जांपल आई वाज प्रिपेयरिंग अ लेक्चर लास्ट इवनिंग व्हेन माय सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टार्टेड अपडेटिंग द मशीन. And then once it starts the updating the machine, my laptop, then it was really difficult कि आप उसको दरमियान में उसको रोकेंगे तो फिर आपको you have to take the risk. So what I did, I waited for quite 20-25 minutes time when this update was completed, and then later on I resumed the preparation of my lecture. Okay, so अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक खुद से ना शुरू हो जाए सिस्टम अपडेट करना, तो आप इसके अंदर कहते हैं टर्न ऑफ ऑटोमेटिक अपडेट, डू इट व्हेन आई विल डायरेक्ट टू डू इट. रिस्टोर पॉइंट्स, this is something very interesting for a system administrator to know that you can recover your system from the restore points. These restore points could be the operating system to predefined recover the operating system from the predefined time. If installation of the application of a hardware driver caused a problem, so try to uninstall the application or that particular driver. If uninstalling does not help, try to restore the computer to an early time when your system was working properly. So Windows XP may create restore points. कौन से restore points आपके लिए create करता है? एक, when an installer या an install or update took place, last upgrade जो आपने किया था उस टाइम पे आप उसको रिकवर कर सकते हैं अपने सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, या 24 आवर्स पहले की जो आपका स्टेट था उसके ऊपर आप अपने सिस्टम को रिकवर कर सकते हैं, या आप मैन्युअली कोई डेट और टाइम उसको बता सकते हैं कि मैं उस टाइम पे अब अपने सिस्टम को उस पॉइंट तक वापस लेकर जाना चाहता हूं, और दिस इज द फैसिलिटी दैट इज प्रोवाइडेड बाय द विंडोज एक्सपी. देन ट्रबल शूटिंग. अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आप काम कर रहे हैं, देन यू आर रिक्वायर्ड टू ट्रबल शूट द सिस्टम. यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, और दीज आर द 5 स्टेप्स. स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. Step number 2, establish a theory of probable causes of the problem. Step number 3, determine an exact cause. Step number 4, implement a solution. Step number 5, verify solution and full system functionality. And step number 6, again last but not least, the most important, document that, ताकि next time जो है ना आपको वो problem ना हो. Step number 1 में हम identify the problem. How can you identify a problem? Hardware है, सॉफ्टवेयर है, किसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, that needs to be identified first. So manufacturer model, operating system, network environment, connection type, ये सारी की सारी चीजें जो हैं इसको आपने देखना है कि ये फॉल्ट कौन सी वाली फॉल्ट है. क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की फॉल्ट है, क्या कोई हार्डवेयर जो है वो काम करने से बाज आ गया है, या कोई नेटवर्क एनवायरनमेंट है जो इस वक्त जो है वो प्रॉब्लम कर रही है, या नेटवर्क कनेक्शन है जो कि लोकली आपको एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा. Then there are 2 categories. One is called the open-ended question and second is called the close-ended question. Open-ended questions क्या क्या हो सकते हैं? What operating system is installed on the computer जिसकी आप troubleshooting करने जा रहे हैं? What programs have been installed recently? क्या किया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कौन सा प्रोग्राम लास्ट आपने इंस्टॉल किया था जिसने कि सिस्टम के अंदर चेंजेस किए, इससे आपको क्लू मिल जाएगा. What updates और सर्विसेज पैक have been installed on this machine? What error messages, जब ये प्रॉब्लम आई थी तो आपको एरर मैसेज क्या आया था? 90% जो भी आपका IT सपोर्ट का बच्चा आता है वो आके पहला क्वेश्चन ये करता है कि सिस्टम ने क्या एरर मैसेज दिया था, क्योंकि दैट इज द मोस्ट लॉजिकल पॉइंट टू स्टार्ट योर ट्रबल शूटिंग. Then what were you doing when the problem was discovered? आप कर क्या रहे थे सर जब ये प्रॉब्लम आई, आप उस वक्त क्या सीक्वेंस परफॉर्म कर रहे थे? कोई हार्डवेयर कनेक्ट करने की कोशिश की थी, कोई सिस्टम को बूट कर रहे थे, या आप प्ले कर रहे थे सिस्टम के साथ, नॉर्मल ऑपरेशन कर रहे थे और ये प्रॉब्लम आई.
Then there are the close-ended question. Open-ended में तो वो questions हैं जो मैंने आपको बताया, close-ended questions हैं, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करें. Does anyone else have the same problem? आपको क्लू मिल जाएगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ आई थी और उसका क्या सोल्यूशन हुआ था. Have you changed your password recently? Have you made any change to your computer? Does anyone else have the access to your computer? Has this problem happened before? یہ کلوز اینڈڈ کوشچن ہے جو کہ آپ ڈائریکٹ اپنے کلائنٹ سے شیئر کر سکتے ہیں. تھانے دارے والے کوشچن نہیں ہے, آپ تھانے داری نہیں کر رہے, بلکہ ان آرڈر ٹو فیسیلیٹیٹ یور کلائنٹ آپ ان سے کہتے ہیں کہ سر میرے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کریں تاکہ میں آپ کا سسٹم جو ہے وہ اس کو ریکور کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کروں. اسٹیپ نمبر 2, اسٹیبلش اے تھیوری آف پروبیبل کاز. ایک تھیوری اسٹیبلش کریں کہ غلطی کہاں پہ ہو سکتی ہے, پرابلم کہاں پر ہو سکتی ہے. دا پرابلم میں be very simpler than the customer thinks. So create a list of most common reason why the error would occur. Corrupted or missing file system ٹھیک ہے, corrupt تو نہیں ہوا ہوا. Incorrect device driver تو آپ نے لوڈ نہیں کیا ہوا یوزر نے. فیلڈ اپڈیٹ اور سروس پیک انسٹالیشن, کیا اس دوران پہ پرابلم آئی تھی. کرپٹڈ رجسٹری, کہیں یوزر نے رجسٹری کے ساتھ رجسٹری ایڈٹ کرنے کی کوشش تو نہیں کی. فیلنگ آف فالٹی ہارڈ ڈرائیو, کیا ہارڈ ڈرائیو جو ہے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے, کیا اس میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے, کیا آپ اپنا پاسورڈ بھول گئے ہیں. وائرس تو نہیں آ گیا آپ کے سسٹم نے اور آپ کا سسٹم جو ہے وہ وائرس کے انفیکٹڈ تو نہیں ہو گیا, اور اسپائی ویئر تو آپ کے سسٹم میں نہیں آ گیا, کوئی لاجک بام تو نہیں آ گیا آپ کے سسٹم کے اندر, یا کوئی میلیشیس انٹینشن کے ساتھ کوئی آپ کے سسٹم کو کسی نے کرپٹ کرنے کی کوشش کی ہو. تو اس میں سے آپ فوکسڈ کریں اور نیرو ڈاؤن کریں کہ کہاں پہ پرابلم اکر ہوئی ہے. After narrowing down, determine the exact cause of the problem. Testing your theories of probable causes one at a time, and start with the quickest and the easiest. پہلی چیز کیا ہے, سسٹم کو ریبوٹ کریں. 90% یہی کرتے ہیں آئی ٹی سپورٹ کے کہ اپنے سسٹم کو ریبوٹ کریں. نہیں ہوتا ریبوٹ, پاور آف کر کے ریبوٹ کرا دیتے ہیں تاکہ وہ ایف ایس سی جو ہے فائل اسکین چیک جو ہے نا وہ پرفارم کر سکیں اس کا. دین رن ایف ایس سی اور اسکین ناؤ ریبوٹ کرنے کے بعد, اور اس کے بعد رول بیک اور انسٹال دا ڈیوائس ڈرائیور وٹ ایور دا لاسٹ ڈرائیور ہیز بین انسٹالڈ. دین انسٹال ریسنٹلی اپڈیٹ اور سروس پیک اگر آپ نے اپ گریڈ کیا ہے. رن سسٹم ریسٹور, رن چیک ڈسک, لاگ ان ایز اے ڈفرنٹ یوزر اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کیا اس یوزر کو بھی پرابلم آ رہی ہے. بوٹ ٹو دا لاسٹ نون گڈ کنفیگریشن. رن ا وائرس اسکین کہ کوئی وائرس نے تو کوئی پرابلم نہیں کیا ہے, اس طریقے سے آپ اس کے اوپر اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. رن ا اسپائی ویئر اسکین, آپ وہ بھی رن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سسٹم میں اسپیسیفک پرابلم جو ہے وہ کب اور کہاں سے کیسے آئی ہے. اسٹیپ نمبر 3, ڈیٹرمن دی ایگزیکٹ کاز. اب ان ساروں میں سے ایک ایگزیکٹ کاز نکالنے کی کوشش کریں. اف دی ایگزیکٹ کاز آف دا پرابلم ہیز ناٹ بین ڈیٹرمنڈ آفٹر یو ہیو ٹیسٹڈ, جو میں نے سارے پوائنٹس بتائے ہیں, تو پھر آپ کوئی تھیوری اسٹیبلش کریں اور کوئی پرابیبل کاز جو ہے وہ زیوم کریں اور اس کا کہ کیا ہو سکتا ہے. آئی کیو استعمال کریں اپنا تاکہ آپ اس کے حساب سے اس کو ریکور بیک کرنے کی کوشش کریں. Then implement a solution. Sometimes a quick procedure can determine the exact cause of the problem or even correct the problem. If a quick procedure does not correct the problem, you might need to research the problem further to establish the exact cause. Then divide بڑی پرابلم کو چھوٹا کرویں. ڈیوائڈ دا پرابلم, لارجر پرابلم انٹو دا اسمالر ون, اینڈ دین اینالائز, فوکس کر سکیں ایک پرٹیکولر ایریا میں کہ کس ایریا کے اندر یہ پرابلم آئی ہے, وہاں پہ کانسنٹریٹ کریں, تو دین یو مائٹ بی ایبل ٹو فائنڈ آؤٹ دی ایرر ان دا سسٹم. اسٹیپ نمبر 5, ویریفائی سولوشن اینڈ سسٹم فنکشنالٹی آفٹر ریکٹیفائنگ دا پرابلم. اب چیک کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں آپ ٹھیک کر کے جائیں تو وہ کلائنٹ آپ کو دوبارہ کال کروے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ویریفائی کریں. ویریفائی فل سسٹم فنکشنالٹی اینڈ امپلیمنٹنگ اینڈ پریونٹنگ میئرز اف نیڈیڈ. This ensures that you have not created another problem while rectifying the problem of the system. So what you do? Reboot the computer,
access all devices and shared resources, whether they are working fine or not. Check event logs to ensure there are no new warning or error messages. Then check device manager to ensure there are no warnings or errors. Then make sure the application run properly, make sure the internet can be accessed, and check task manager to ensure that there are no undefined programs running. कोई malware ऐसा तो नहीं है दोबारा जब आपने सारा सिस्टम रिकवर किया आप समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम खुद ब खुद ठीक हो गई है, लेकिन वो जो malware है वो दोबारा रन हो रहा है. वो आप कहाँ से देख सकते हैं? मैंने आपसे प्रॉमिस किया था एंड ऑफ द लेक्चर में आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं. एंड वेरीफाई दैट द सॉल्यूशन इन द सिस्टम functionality has been restored and is doing fine. उसके बाद लास्ट स्टेप था जो मैंने आपसे कहा था कि उसको नहीं भूलना, वो है डॉक्यूमेंट योर फाइंडिंग, ताकि नेक्स्ट टाइम आप अपने एक्सपीरियंस से फायदा उठा सकें. डिस्कस द सोल्यूशन विद द कस्टमर, हैव द कस्टमर कंफर्म दैट द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड, उससे कहें कि वो भी चेक करवे अच्छी तरह, एंड डॉक्यूमेंट द प्रोसेस, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, What was the solution, आपने उसके साथ क्या किया, and components used जो आपने यूज किए, कौन से टूल्स यूज किए, कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, and amount of time that you have spent in solving the problem. अगर ये आप डॉक्यूमेंट करवेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम you will be facilitated और फिर आपको वो प्रॉब्लम जो है वो दोबारा नहीं होगा, या नेक्स्ट टाइम जब वो प्रॉब्लम होगा तो फिर आप उसको रिकवर कर पाएंगे. सो कॉमन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस जो हैं उसमें हम कहते हैं कि कंप्यूटर प्रॉब्लम्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, या हार्डवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, और सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज. सो यू विल रिजॉल्व सम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रॉब्लम मोर देन जनरल यूजर्स. सो लेट्स समराइज. And summary क्या है कि ensure that you have fully understand the technology needs of the customer. ठीक, तभी आप उसको सर्विस दे पाएंगे. Then you know the difference between the common operating systems, वो आपको पता होने चाहिए. Match the customer needs to the proper technology, जहां से हमने अपना लेक्चर स्टार्ट किया था. नो द डिफरेंट मेथड टू इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम. एक मेथड तो मैंने आपको ये बताया, लेकिन आपको डिफरेंट मेथड्स आने चाहिए. यूएसबी से भी इंस्टॉल करना आना चाहिए, आपको रिमोट इंस्टॉल करना भी आना चाहिए, आपको इमेज बैकअप के जरिए इंस्टॉल करना भी आना चाहिए. ठीक है, और आपको किसी सर्विस पैक को लेकर एक मैंने प्रोसीजर बताया था कि वर्चुअल ड्राइव एक ऐसे सिस्टम के ऊपर जिस पे सीडी रोम नहीं है, लेकिन आपने सीडी रोम से आपका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर शुरू होती है, तो एक वर्चुअल डिवाइस बनाने का मैंने प्रोसीजर एक प्रोग्राम में एक कोर्स में सिखाया था सी लैंग्वेज में. तो वो भी एक तरीका होता है जिससे आप इंस्टॉल कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को. तो कहने का मतलब ये है कि यू शुड नो कि डिफरेंट मेथड्स क्या है, बायोस को कैसे सेट करना है, सारा काम करने के बाद पूरी डिवाइस कैसे उसके साथ कनेक्ट करनी है, आपने हार्ड डिस्क के जो स्पेक्स हैं वो बायो के अंदर कैसे, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो जो फ्लैश ड्राइव होती है आपके सिस्टम के ऊपर, ये फ्लैश सीडी नहीं, आपका बायोस इनपुट आउटपुट सिस्टम जहां पे आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं. देन अंडरस्टैंड हाउ द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैन स्टॉप द प्रॉब्लम बिफोर दे अकर. टाइम टू टाइम आप टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करें, आपका जो एंटीवायरस है उसको टाइम टू टाइम रन करते रहें, ताकि मालवेयर जो है वो आपके सिस्टम पे आके ना बैठे और डिनायल और सर्विस जो है वो उसकी तरफ आपकी मशीन जो है वो ना जाए. नो विच प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोसीजर्स आर अप्रोप्रिएट फॉर दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर कस्टमर, एंड नो हाउ टू ट्रबलशूट द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉब्लम्स. ओके, सो इससे पहले कि जस्ट आई स्टॉप हियर, मैंने आपसे वादा किया था, और व्हाट आई कैन डू, लेट मी सी, आई वुड लाइक टू शो यू सम थिंग्स. ठीक, यहाँ पे अगर आप प्रेस करते हैं कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट, और यहाँ पे हम लेते हैं टास्क मैनेजर.
देखिए, this is the task manager that gives you the information of the performance of the CPU. CPU utilization is 24%, 25%. और अभी हम इसकी भी फर्दर डिटेल देख सकते हैं. मेमोरी यूटिलाइजेशन इज 1.72 गीगाबाइट्स. ये कैसे चेंज हो रही है? कर तो हम कुछ नहीं रहे. बेसिकली आपकी जो टेम्परेरी फाइल सेव होती हैं, सिस्टम बैकग्राउंड के अंदर जो काम कर रहा होता है, जो पेज फॉल्ट्स वगैरह हैंडल कर रहा होता है, उसकी तमाम डिटेल्स है. तो टोटल फिजिकल मेमोरी इज अराउंड 4 GB, 3947 MB का मतलब है तकरीबन 4 GB. कैश जो इसमें है 50% इज कैश्ड, अवेलेबल इज 50%, और ये फ्री पेजेस जो है आपको शो कर रहा है वो नंबर ऑफ पेजेस आ रहे हैं यहाँ पर. और ये CPU यूटिलाइजेशन है, तो मस्ट बी बैकग्राउंड के अंदर एक प्रोसेस चल रहा है. और इस पर्टिकुलर कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेस चल रहा है? ये जो हमारे लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है, जो लेक्चर इस वक्त मैं आपको दे रहा हूँ, ये इस मशीन के ऊपर इस रिकॉर्डिंग जो है वो जारी है, जिससे कि CPU यूटिलाइजेशन भी आप देख सकते हैं और उसकी मेमोरी यूटिलाइजेशन जो है वो भी आपको नजर आ रही है. ओके और अगर आप रिसोर्स को मॉनिटर करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो डिफरेंट इमेजेस हैं, जो सिस्टम जो एग्जीक्यूट हो रहा है, ये परफॉर्मेंस एक्जी जो हमारा ये वाला प्रोसेस है जो कि हमें ये टास्क मैनेजर है ये उसके वो कंज्यूम हो रहा है. और उसके बाद ये सिस्टम जो है, उसके बाद ये देखें कि ये रीड राइट कितने हैं, और यहाँ पर इसका डिस्क जो है उसकी आप देखें परफॉर्मेंस यूटिलाइजेशन जो है, ये एक ग्रिड जो है वो 60 सेकंड्स की है, और 60 सेकंड्स के अंदर ये आपको सारी ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कब कब डिस्क की यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है. और अगर आप मेमोरी की यूटिलाइजेशन देखना चाहें तो ये आपके सारे करंट प्रोसेसेस हैं, इमेजेस हैं, और ये उनका स्टेटस है, और ये उसके हार्ड फॉल्ट्स हैं, पेज फॉल्ट्स है, ये उसका डिफरेंट डेटा जो है रियल टाइम के अंदर अपडेट हो रहा है. और अगर आप फिजिकल मेमोरी को देखें तो ये है हार्डवेयर रिजर्व 149 MB इन यूज, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना है, और स्टैंड बाई इतना है, फ्री इतना, ये अब आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं. ठीक है, और ये देखें इन यूज, मॉडिफाइड, अवेलेबल, कैश्ड, टोटल, स्टोर्ड. और अगर आप देखना चाहते हैं डिस्क के हवाले से तो आप देख रहे हैं कि डिस्क के हवाले से भी आपको ये मैं शायद दिखा चुका हूं आपको. नेटवर्क, ये नेटवर्क का यूजेज है इसका, वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन, और ये है आपका TCP/IP कनेक्शन जो है, जो कि आपका है. और यहाँ पर अब आपको ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इसको सारे को एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन आप ये देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपने इसमें से पढ़ी हुई हैं, कुछ मैंने पढ़ाई हैं आपको, कुछ आपने नेटवर्क के कोर्स के अंदर पढ़ी होंगी, तो तभी आप इसको इंटरप्रेट कर पाएंगे. और ये आपका मेन ओवरव्यू स्क्रीन है जिसमें डिस्क की परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं, सुपर टॉप पे CPU की परफॉर्मेंस भी आप देख रहे हैं, और यहाँ पर जनाब ये CPU की परफॉर्मेंस है, ये डिस्क की परफॉर्मेंस है, ये नेटवर्क की परफॉर्मेंस है, और नीचे आपकी ये मेमोरी की परफॉर्मेंस नजर आ रही है यहाँ पर. ओके सो ये आपके पास एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी है जिसकी मदद से आप इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं. यहाँ पर भी अगर आप देखना चाहें, ये वो एप्लीकेशन है, अगर आपको जैसे बता रहा था, एक तो मेरी प्रेजेंटेशन है बैकग्राउंड के अंदर जो कि अभी तक यहाँ पर नीचे मौजूद है, और अगर यहाँ से मैं देखूँ तो ये हमारी प्रेजेंटेशन जो है ये ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है. और ये है जनाब हमारा वो सॉफ्टवेयर जो कि रन हो रहा है, जो कि कैप्टिवेट हमारे लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा है. ये वो प्रोसेसेस हैं विच आर करंटली बीइंग यूज्ड. तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई स्पाईवेयर प्रोसेस ऐसा तो नहीं है जो कि इधर आके बैठा हुआ है और वो आपके CPU का टाइम भी कंज्यूम कर रहा होगा, वहाँ से भी पता चल जाएगा, मेमोरी कंज्यूम कर रहा है वहाँ से भी पता चल जाएगा. तो अब आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रोसेस जो है वो इस वक्त कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है. ये एडोब कैप्टिवेट जो है इस वक्त अगर आप देखें तो यही सबसे ज्यादा CPU को यूटिलाइज कर रहा है. सर्विसेज जो मैंने वहाँ पे स्किप की थी, एक्सप्लेन नहीं की थी, ये वो तमाम सर्विसेज हैं जो रनिंग है. ये सर्विसेज हैं जो स्टॉप है. नेट TCP पोर्ट इज स्टॉप्ड, विजुअल सर्विस इज स्टॉप. ये सैम्स सर्विस जो है इसका मैंने जिक्र किया था विंडोज विस्टा के हवाले से. और ये वो सर्विसेज हैं डिफरेंट जो है, ब्लूटूथ सर्विस, ये सर्विसेज सारी आपकी करंटली रन हो रही हैं. और एप्लीकेशन भी हो गया, नेटवर्क भी हो गया. यूजर में ऑब्वियसली आई एम लॉग्ड इन एज द नेम ऑफ दिस यूजर.
تو ایک تو اس طریقے سے آپ اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں, یو اسٹارٹ لرننگ اٹ اینڈ یو کین اسٹیبلش اے ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ. دین ریزولوشن کی بات اگر ہم کریں تو اس کو رائٹ کلک کریں اس کی اسکرین کے اوپر اپنی ماؤس کو, اور یہاں پہ آپ کو چیز نظر آئے گی ایک ہے اسکرین ریزولوشن. اسکرین ریزولوشن کے اندر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ 13:786 ریزولوشن کے اندر سیٹ اپ ہوا ہے. آپ ڈفرینٹ ریزولوشن یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے میں اس کو اس وقت چینج کر کے نہیں دکھاؤں گا, بلکہ میں صرف آپ کو ڈیمونسٹریٹ یہیں سے کروں گا. دین وی کین سی ہیئر یہ ملٹیپل مانیٹرز ہمارے پاس اس وقت ہے 1 out of 2. ایک یہ مانیٹر ہے اور ایک ہم نے اس کے ساتھ اور اٹیچ کیا ہوا ہے تاکہ جس پہ اگر کوئی کریکشنز کرنی ہے ٹیچر نے سائملٹینیسلی رائٹنگ کی ہے تو اس لیے یہ آپ کو دکھا رہا ہے یہاں پہ 1 and 2 ڈیوائسز ڈسپلے ڈیوائسز آر اٹیچڈ ود دس, آپ کا ڈسپلے کارڈ کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اس کے بعد ہم اور کیا چیز ہے ابھی ڈپلیکیٹ these displays, اور یہاں سے اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں show desktop 1 only, show desktop 2 only, یہ ہم اس کو نہیں چھیڑتے بھائی. اوکے, سو کنیکشن ٹو دا پروجیکٹر ہے, یہ ساری انفارمیشن ہے. اگر آپ اس انوائرمنٹ میں تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے then you should be able to find it out. So what I do, I will just close it out. Anyhow, at this point, dear students, I would like to stop, and this was my last lecture. So thank you very much کہ آپ نے مجھے 32 لیکچر تک برداشت کیا. I hope کہ آپ been able to deliver this course, اور میں آپ کو ایڈوائس یہی کروں گا کہ آپ اپنی ٹیکسٹ بک جو ہے اس کو آپ ریڈ آؤٹ کریں, میرے لیکچرز کو سنیں, پہلے ریڈنگ کریں پھر لیکچر کو سنیں, یا لیکچر سننے کے بعد پھر دوبارہ ریڈ آؤٹ کریں, تب آئی ایم شیور کہ یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. آئی ہیو ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ میں اس کو کور اپ کر سکوں, جو بیسک کمپوننٹس تھے جو آپریٹنگ سسٹم کا کورس تھا, دیٹ آئی ہیو ریئلی covered that. اب آپ کو کچھ اسائنمنٹس پہ آپ کو کام کرنا ہوگا, جس کے بعد آئی ایم شیور یو ول ہیو ٹو appear in the examinations. So I wish you all the best, your success in this particular course generally, اور جو آپ کا پروگرام ہے اس میں particularly, اور especially I wish you a success in your life. انشاءاللہ آپ سے پھر کبھی کسی نئے کورس میں ملاقات ہوگی. Till then, I'm your teacher Ahmed Mumtaz Mustahsan for CSC 322. اللہ نگہبان. خدا حافظ.